Hello friends, so today in this video our topic is from the ENT. So from the ear we have to study the otosclerosis. So what is the otosclerosis? It is the fixation of the stapes to the oval window due to the disposition of the new bone in the annular ligament of the stapes. मतलब कि जो स्टेपिस बोन है उसका फिक्सेशन हो जाएगा फ्रॉम द ओवल विंडो। क्योंकि वहाँ पे कोई दूसरा न्यू बोन आ जाएगा एन्यूलर लिगामेंट पे जहाँ पे स्टेपिस पहले था। तो हम इस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे? ओटोस्क्लेरोसिस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल द ओटोस्क्लेरोसिस इट इज़ अफेक्टेड द एज ग्रुप बिटवीन द 20 to 30 years. Next one is the sex. So the otosclerosis is more common into the females, hereditary in 50% cases, and blood group in which the affected family members may have the same blood group, यानी कि एक ही फैमिली के सेम ब्लड ग्रुप के मेंबर होंगे वो otosclerosis से अफेक्ट होंगे। Now hormonal factors are also affected, metabolic theory, and the last one is there is a generalized osseous disease. मतलब कि पेशेंट कोई भी ईयर से रिलेटेड डिसीज से अफेक्ट हो रहा है तो भी ओटोस्क्लेरोसिस हो सकता है। नाउ द नेक्स्ट वन इज देयर इज अ पैथोलॉजी ऑफ द ओटोस्क्लेरोसिस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज अ मैच्योर लेमर बोन इज रिमूव्ड बाय द ओटोस्क्लेरोसिस एंड इट इज रिप्लेस्ड बाय द इमेच्योर स्पॉन्जी बोन ऑफ द इंक्रीज्ड थिकनेस, वास्कुलरिटी एंड सेलुलरिटी। मतलब कि जो मैच्योर बोन है उसको ओटोस्क्लेरोसिस से रिमूव्ड किया जाएगा और उसको रिप्लेस्ड किया जाएगा इमेच्योर स्पॉन्जी बोन से। नाउ नेक्स्ट इट अफेक्ट्स द मिडल लेयर ऑफ द ओटिक कैप्सूल और एंड बोनी लेब्रिंथ, यानी कि ये ओटिक कैप्सूल के लेयर को भी अफेक्ट करेगा और बोनी लेब्रिंथ दोनों को। नाउ नेक्स्ट देयर इज अ टाइप्स ऑफ द ओटोस्क्लेरोसिस। there are 3 types: stapedial, cochlear, and the third one is the histological. Now next there is a new bone formation take place at the annular ligament of the oval window which makes the stapes fixed and leads to conductive deafness. So यहाँ पे जो एनुलर लिगामेंट है उस पर न्यू बोन का फॉर्मेशन होगा तो स्टेपिस के फिक्स्ड और कंडक्टिव डेफनेस प्रोड्यूस होगी। स्टेपिस का फिक्सेशन आउट ओवल विंडो यानी कि ओवल विंडो के बाहर हो जाएगा। सो द नेक्स्ट वन इज देयर इज अ क्लिनिकल फीचर्स ऑफ द ओटोस्क्लेरोसिस। सो इनटू दिस द पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम द लॉस ऑफ द हियरिंग, यानी कि कंडक्टिव डेफनेस इज प्रेजेंट इनटू द ओटोस्क्लेरोसिस। Now the next one is there is a treatments of the otosclerosis. Into this there is a hearing aids or a surgery which is help to bones of the ear vibrate more freely.